Good morning, students. So this will be your lecture 12 of concrete technology. So if you see, last class we were studying about specific gravity and water absorption and moisture content. Like we studied about how free moisture affects the workability and durability of concrete, and similarly how moisture, like how dry aggregates, if aggregates are too dry, then how it absorbs water from the mixing water and affects the workability and durability. And then we also studied about bulking of aggregates, right? How free moisture present in aggregate, how it forms a film around each particles and exerts surface tensions, hence keeping each particles away from each other and causing expansion of the sand, increase in the volume of the sand, and therefore causing bulking of sand. So today we will study about soundness of aggregate. Now if you remember, in chapter 1 we studied about soundness of cement. So likewise here it's about soundness of aggregate, and it's basically the same thing. Just like soundness basically means the ability of any substance to resist its excessive change in volume, यानी कि एग्रीगेट में उसका कितना एबिलिटी है कि वो अपने वॉल्यूम को रिटेन रख सके, वो अपने वॉल्यूम को सेम रख सके, उसको रेजिस्ट how much ability it has to resist its excessive volume change due to physical conditions. Okay, so we want to check like the ability of our aggregate to retain its original volume against physical conditions, like for example freezing. If we keep any aggregates in such conditions like very freezing, thawing means any place where it's too hot and the water it starts to melt, temperature variation, or in places where there is a huge temperature variation, like for example in places like deserts. Like during daytime it's very hot in desert, whereas during night it's very cool. So there is a huge temperature variation in such places. Or alternate wetting and drying, or if there are such places where there is like continuous wetting and drying, okay? So in such cases there are chances that our aggregates might deteriorate, or it might have a chance to expand means increase in volume. So under such condition we want to check if our aggregates have the ability to retain its volume. Retain means अपना वॉल्यूम को सेम रखने का एबिलिटी है कि नहीं, या फिर वो कोई भी अगर कोई भी एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन आया तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो एबिलिटी को हम बोलते हैं साउंडनेस. Let us see the last point. Unsound aggregate means aggregate that undergo more than specified amount of volume change. So कोई भी aggregate अगर उसमें change in volume दिख रहा है because of any physical condition, उसमें maybe temperature variation था, या फिर वो ऐसी atmosphere में रखा था जहाँ पर alternate wetting and drying हो रहा था, or any places where you can see a huge temperature variation, तो ऐसी places रखने की वजह से अगर उस aggregate में आपको volume changes दिखा, यानी कि वो जब hot हो रहा था तो उसका volume expand हो रहा था, और बाद में जब temperature cool down हुआ तो उसको फिर से shrink कर रहा था. Shrink means to become smaller than the original volume. So अगर ऐसा changes दिख रहा है हमें, changes in volume, तो फिर हम बोलेंगे कि वो aggregate unsound है. Then we label that aggregate as unsound. Now comes 11 point, cleanliness. Many times we don't take care of this point, like we feel like it's okay if we keep our aggregates anywhere, it doesn't matter because ultimately we are going to mix it. But no, that's a very wrong idea. You really need to make sure that your aggregates are free from impurities or any chemical substance or any harmful substance. For example, like traps, andesites, rhyolites, sandstones, limestones,
Okay, so these are the names of the aggregates. So these aggregates, especially traps, andesites, rhyolite, sandstone, limestones, they have ability to get mixed with impurities, or if any impurities gets mixed with the aggregate, okay, then ultimately that aggregate is going to go इनसाइड कॉन्क्रीट, यानी कि वो कॉन्क्रीट के साथ मिक्स होने वाला है वो एग्रीगेट, तो बाद में क्या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आने की वजह से स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं. सो you really need to make sure that the aggregates that you are using, it needs to be clean and it needs to be free from any harmful impurities. Now let us see the 12th point, alkali aggregate reaction. You really need to understand this, okay? Let me just go through it. Some aggregates contain reactive silica which can react with alkalis present in cement. Okay? क्या बोल रहा है कि कोई एग्रीगेट में क्या होता है, रिएक्टिव सिलिका, सिलिका यानी कि SiO2, SiO2 होने का चांस होता है, ठीक है, SiO2 केमिकल विच कैन रिएक्ट विथ alkalis प्रेजेंट इन सीमेंट. और हमें पता है कि सीमेंट में हम थोड़ा सा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड में रिएक्ट विथ सिलिका, ओके, विच इज़ प्रेजेंट इन एग्रीगेट्स. सो because of which, as a result, alkali silicate gels of unlimited swelling is formed. Okay, so what happens, the silica present in aggregates might react with the alkalis present in cement. As a result, what is formed, alkali silicate gels are formed, and these gels have a property of swelling. Swelling यानी कि फूल जाना, वो सीमेंट को, वो एक कंक्रीट को फुला देता है, बिकॉज अल्कली सिलिकेट जेल्स फॉर्म होता है जो वो स्वेल करवाता है. सो अगर स्वेलिंग आ गया कंक्रीट में तो क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, और अगर वॉल्यूम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो क्या होंगे, अल्टीमेटली उसमें क्रैकिंग्स दिखना शुरू होगा. सो लेट अस रीड दिस पॉइंट. The silica gel continues to grow in size, exerting osmotic pressure and causes pattern cracking. Okay, so this silica gel, it keeps on growing, वो उसका volume जो है वो it keeps on expanding and it keeps on growing, and if there is if the volume increases, then obviously it will cause exertion, it will cause pressure to the surface of the concrete, and hence what will happen, there you will see a pattern cracking. For example, if this is your concrete, ठीक है, आपने एक concrete cube बनाया है, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें alkali aggregate reaction form हुआ और silica gels form होने लगा. These are your silica gels, ठीक है. अब वो क्या हुआ, ये gels जो है ये expand करवाते हैं, ये क्या करेंगे, swelling यानी कि फूल जाएंगे. फूल जाने के बाद क्या करेंगे, it will cause pressure over the surface, ठीक है, exertion. ये सिलिका जेल जो है ये प्रेशर कॉज करेंगे towards the surface of the concrete. और अगर concrete वो प्रेशर को झेल नहीं पाया, ठीक है, it cannot further increase its volume, then what will happen, there will be a cracking. There will be a cracking scene, like there will be a cracking, then concrete will start to crack, pattern crack, ठीक है. So that's what can happen if alkali aggregate reaction happens. Hence it reduces durability and strength. Okay, so ultimately it's going to hamper your durability and strength. Now let us read grading of aggregates. I have already explained you this point. Let us read it again so that it will be clear. Coarse and fine aggregates to be used for making concrete should be well graded. Okay, gradation means the particle size distribution of aggregates. Test for grading of aggregates is carried out by using sieve analysis method. Okay, so what does the first point say? Coarse and fine aggregates to be used for making concrete should be well graded. यानी कि जो aggregates हम use करने वाले हैं, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट यानी कि एग्जाम्पल ग्रेवल्स, और फाइन एग्रीगेट यानी कि अपना सैंड पार्टिकल्स. ओके,
ये जो है ये वेल ग्रेडेड होनी चाहिए. वेल ग्रेडेड मतलब क्या था? Your aggregate should contain all size of particles starting from small to medium size to medium big to very small particles also. So when your aggregates have all size of particle present starting from small to big, then we call it that our aggregates are well graded. Okay, and we had also studied if your aggregates are well graded, then obviously it will contain less number of voids, यानी कि less number of gaps. How? अगर आप में आपके एग्रीगेट्स में हर किस्म का साइज ऑफ पार्टिकल्स है तो वो क्या करेगा, जो गैप्स जो है ये छोटे छोटे गैप्स जो है ये भी अपना छोटे छोटे फाइन एग्रीगेट्स जो है, जो स्मॉलर साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स है वो उसको फिल करेंगे, राइट? सो दैट वे वी विल नॉट हैव टू मेनी वॉइड्स और गैप्स. सो व्हाट इट सेज इज दैट to build a good concrete, you need to have your aggregates well graded. Means it should contain all size of particles ranging from small to big. Okay, like you should not have uniformly graded particles, यानी कि एक ही size of aggregates particles नहीं होनी चाहिए. उससे क्या होगा, देखो अगर आपके particles एक ही size के है तो बीच बीच में क्या होगा, आपका gaps रह जाएंगे. See, ये gaps रह जाएंगे. Can you see this gaps? This voids रह जाएंगे. And these voids cannot be filled because your aggregates do not contain any smaller particles. So hence your aggregates will have too much gap. So therefore, in concrete perspective, we always recommend that we have well graded aggregates. Similarly, here it also says what is gradation. Okay, anywhere you see this word gradation, what does it mean? Gradation means the particle size distribution of aggregates. So what is gradation? Your particle size distribution, यानी कि आपकी particles जो है, particle का size कितना अच्छे से distribute है, उसमें बस बड़े बड़े aggregates है या छोटे छोटे aggregates है या उसमें mixed है या बस बड़े है और छोटे है और बीच का जो medium aggregates है वो है ही नहीं, या फिर उसमें बस बहुत ही छोटे छोटे एग्रीगेट्स है या फिर उसमें बस बहुत ही बड़े बड़े एग्रीगेट्स है. तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टिकल, वो स्टडी करने को हम बोलते हैं ग्रेडेशन. इट मीन्स द स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स, हाउ वेल योर साइज ऑफ एग्रीगेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट्स कॉल्ड ग्रेडेशन. नाउ द लास्ट पॉइंट. Test for grading of aggregates is carried out using the sieve analysis method. Okay, so in order to find gradation, यानी कि आपके aggregates how well graded है या फिर उसमें gap graded है, uniformly graded है, कैसा भी gradation है, वो पता करने के लिए हम कौन से method use करेंगे? We are going to use this method. It's called sieve analysis method. Now let us read grading of aggregates. What is known as good grading? ठीक है, कौन से एग्रीगेट को हम बोलते हैं गुड ग्रेडिंग, ये भी अभी हमने पढ़ा. Let us again read. Aggregates containing all standard fraction of aggregate in required proportion, such a produces minimum voids. ठीक है, so what does it mean? गुड ग्रेडिंग उसको बोलते हैं एग्रीगेट्स जिसमें क्या है, जिस कंटेन ऑल स्टैंडर्ड फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट्स जिसमें हर फ्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्रेजेंट है, यानी कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, मीडियम साइज, मीडियम बिग, मीडियम स्मॉल, हर साइज ऑफ एग्रीगेट्स प्रेजेंट है तो हम उस एग्रीगेट्स को बोलते हैं गुड ग्रेडिंग. ओके, और सबका प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि जितना हमें चाहिए तो अपना अपना प्रॉपर प्रोपोर्शन में सब साइज ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं तो हम उस एग्रीगेट को बोलते हैं गुड ग्रेडिंग एग्रीगेट्स. ओके, मिनिमम वॉइड्स. सो दिस इज लाइक पॉइंट 2 फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, मिनिमम वॉइड्स यानी कि अगर मिनिमम गैप्स है तो क्या है,
ऑब्वियसली मिनिमम पेस्ट टू फिल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर आपके एग्रीगेट्स में कम वॉइड्स है, कम गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए भी आपको कम पेस्ट लगेगा, यानी कि सीमेंट पेस्ट जो है वो भी कम लगेगा। तो इन शॉर्ट यू आर सेविंग मनी, यू आर सेविंग सीमेंट कॉस्ट, एंड इफ cost of cement saves, if you're then obviously you can make economic cement. So hence if less cement water is used, then we can make low cost concrete. Low cost increases strength and durability. ठीक है, तो these are all connected. If you use well graded aggregates, then obviously minimum gap, minimum void होगा, तो पेस्ट भी मिनिमम लगेगा। इन शॉर्ट आपको लो कॉस्ट भी लगेगा, प्लस आपको अच्छा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी मिल सकते हैं। Now Fuller and Thompson's conclusion. So it's like they are the researchers in concrete. Okay, their names are Fuller and Thompson's conclusion. अब उन्होंने क्या conclude किया? उन्होंने conclude किया maximum density gives highest strength. Okay, so what does it mean? आपके एग्रीगेट जितना ज़्यादा डेंसिटी, आपकी कंक्रीट का डेंसिटी जितना ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपका कंक्रीट देंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस टू रिमेंबर दिस, ओके, लाइक यू रिमेंबर दिस स्लाइड आई हैड टॉट यू, दिस वाज योर स्लाइड डायग्राम 1, दिस वन वाज योर सेकंड डायग्राम। इन दोनों में से डेंसिटी किसका ज़्यादा था? ऑब्वियसली सेकंड का ज़्यादा था। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि and less number of gaps and more number of aggregates means aggregate का weight ज़्यादा है। So number 2 has diagram 2 has more density because its weight is greater than its weight is greater than diagram 1, है ना। यहाँ देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है क्योंकि इसमें एग्रीगेट ज़्यादा है, और इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी भी किसका ज़्यादा है? नंबर 2 का ज़्यादा है। तो इसमें आप देखो इसमें गैप भी कम है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉइड्स कम है, अगर वॉइड्स कम है तो क्या है? गैप कम होगा, गैप कम है तो सीमेंट पेस्ट भी हमें कम लगेगा, है ना। सीमेंट पेस्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ये गैप्स को फिल करने के लिए भी सीमेंट पेस्ट हमें कम लगेगा। तो इन शॉर्ट हम इकोनॉमिक कंक्रीट भी बना रहे हैं, प्लस हम स्ट्रेंथ वाला वो स्ट्रेंथ भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन नो दैट नंबर 1, इफ़ देयर इज़ हाई डेंसिटी क्यों है? क्योंकि उसमें एग्रीगेट्स का वेट ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीगेट्स भी ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि उसमें वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स भी है, मतलब कि गैप कम है, गैप कम है तो वॉइड्स कम है, वॉइड्स कम है तो सीमेंट पेस्ट भी कम लगेगा। अगर सीमेंट पेस्ट कम लगा तो आपकी कंक्रीट इकोनॉमिक हो सकते हैं, प्लस आप स्ट्रेंथ भी अचीव कर सकते हैं। सो सिमिलरली यंग्स कंक्लूजन, अनदर रिसर्च, उसने क्या कंक्लूड किया? लीस्ट सरफेस एरिया रिक्वायर्ड लीस्ट वाटर एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये यंग्स रिसर्चर ने क्या बोला कि आपका एग्रीगेट है, ठीक है। व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया यानी कि ये एरिया, एनी एरिया दैट यू कंसिडर सरफेस, ठीक है। ये एरिया जो है बाहर का, ये एग्रीगेट का एरिया जो है, दिस आर ऑल सरफेस एरिया। तो वो बोल रहे जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम पानी लगेंगे, और जितना कम पानी लगेंगे उतना ही कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। दैट वाज यंग्स कंक्लूजन। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट Abraham conclusion was. Abraham's conclusion was the water required to produce given consistency is dependent more. He introduced a parameter known as fineness modulus. अब अब्राहम ने क्या बोला? उसने बोला कि water required to produce given consistency is dependent more, यानी कि वाटर जो है जो हम यूज़ करेंगे एक कंसिस्टेंसी क्या है? एक फ्लो लाना, ठीक है। यानी कि थिन पेस्ट बनाना, थिक पेस्ट बनाना, मीडियम थिक थिन बनाना, उसको क्या बोलते थे हम? कंसिस्टेंसी, यानी कि फ्लो ऑफ पेस्ट। तो ये
कैसा पेस्ट बनाना है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थिन या थिक। तो इन शॉर्ट वाटर जो है, वाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस करने में, और वाटर ही आपको दिखाएंगे, वाटर ही डिफाइन करेंगे कि आपके कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं या वीक बन सकते हैं। तो उसने एक टर्म भी निकाला, इसका नाम है फाइननेस मॉड्यूलस। उसने एक पैरामीटर निकाला एग्रीगेट्स को मेजर करने के लिए, एग्रीगेट्स के फाइननेस, एग्रीगेट्स के ग्रेडेशन को मेजर करने के लिए उसने एक पैरामीटर निकाला, उसको हम बोलते हैं फाइननेस मॉड्यूलस। Before that, let us try to understand, okay? So here in this image, now from this image you can understand very well what is well graded. Well graded क्या है? जिसमें हर size of particles present है. You can see here there are big gravels also. फिर medium size भी है ना? Medium से छोटे भी है, सब साइज़ है, और छोटे में भी बहुत छोटे। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो इसमें गैप्स बहुत कम है ना? आपको बस गैप यहाँ दिख रहा है, और कहाँ है गैप? ऐसा छोटे मोटे गैप दिख रहे है ना? गैप्स कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि जितना भी गैप्स है वो पूरे आपके स्मॉल साइज ऑफ एग्रीगेट्स फॉर्म फुल उसने उसको भर दिया। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या है? जिसमें हर साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब पोरली ग्रेडेड क्या है? पोरली ग्रेडेड में एक ही साइज ऑफ एग्रीगेट्स है, यानी कि इसको हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी बोलते हैं। We call it uniformly graded also. Uniform. इसमें क्या दिख रहा है? There is only one type of size of particle, यानी कि बड़े वाले एग्रीगेट्स है, बस वही है। तो आप इसमें नोटिस करो कितना बड़े बड़े voids प्रेजेंट है, कितना बड़े बड़े गैप्स प्रेजेंट है, और इसको हम फिल नहीं कर सकते। Why? Because it does not have any small size particles to fill this void. अब देखो गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड मतलब क्या है? इन दोनों के साइज के बीच में, बड़े और छोटे के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। देखो एक में इतना बड़ा एग्रीगेट यूज़ किया है और सीधा एकदम छोटे छोटे एग्रीगेट्स यूज़ किया है, तो इन दोनों की साइज़ में एकदम बड़ा गैप है ना, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए हम इसको गैप ग्रेडेड एग्रीगेट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें बस मतलब हर साइज ऑफ पार्टिकल्स मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं उसमें है, तो अगर बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा है, हमारे वेल ग्रेडेड जैसा नहीं है, तो उसको हम गैप ग्रेडेड भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर सेम थिंग आई टॉट, लाइक टाइप ऑफ ग्रेडेशन। नंबर 1 वी हैव यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक ही साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट जब होता है, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पर, उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं। मतलब देखो फ्यू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी कम हो रहा है ना, देखो कांटेक्ट भी, एक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी बहुत कम हो रहा है, इतना ही हो रहा है। सेकेंड थिंग, पोर इंटरलॉक, बिकॉज ऑफ सेम पार्टिकल्स, ठीक है, एक ही साइज ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक मतलब एक दूसरे के साथ चिपक के इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स सेम साइज ऑफ एग्रीगेट्स। एंड हाई permeability. What is permeability? The ability of the substance to let the water pass through or any liquid pass through is called permeability. यानी कि कोई भी substance का ability to let any liquid pass through, उसको हम बोलते हैं permeability. अब आप इसमें देखो, इसमें कितना बड़े बड़े गैप से, बड़े बड़े void से, अगर आप इसमें पानी पास कराओगे तो पानी easily पास होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर पानी इजीली पास होंगे तो हम बोलेंगे कि ये बहुत हाई परमिएबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली ये वेल ग्रेडेड, देखो वेल ग्रेडेड में गुड इंटरलॉक है। वाई? क्योंकि उसमें हर साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, और अगर एक दूसरे के साथ वो लॉक भी नहीं हो रहा है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन बना के एक दूसरे को लॉक करके एकदम चिपक के बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी अच्छे देंगे। सेकेंड थिंग, लो परमिएबिलिटी। वाई लो परमिएबिलिटी? क्योंकि इसमें गैप्स कम है, गैप्स कम है तो पानी पास नहीं हो सकते, अगर पानी पास नहीं हो पाया तो हम बोलते हैं लो परमिएबिलिटी। गैप ग्रेडेड में यू कैन सी हियर, राइट, एक तो बहुत बड़ा है, एक तो बहुत छोटा। ओनली लिमिटेड साइज, यानी कि इसमें बस लिमिटेड साइज है। लिमिटेड मीन्स ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइजेस।
सेकेंड थिंग गुड इंटरलॉक. हाँ, इंटरलॉक दे सकते हैं क्योंकि इसमें फिर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के साथ चिपक के फ्रिक्शन बिल्ड कर सकते हैं, बट इट विल स्टिल हैव लो परमिएबिलिटी. ओके, लेकिन परमिएबिलिटी फिर भी लो होंगे. Just check the time. So we will keep our lecture up till today, up till here for today, and we'll continue with next lecture from next class. Okay, I hope you understood this lecture. I want you guys to revise this lecture properly. It's very easy and it's very interesting. You just need to remember the names and type of radiation, and it's all the picture speaks. So it all depends on how much you revise every day. The more you revise, the more you learn about these words, the more you will get more familiar, and that will help you remember things so that you don't have to stress yourself during exams. So please study every day, and if you have any doubt, please ask me. Thank you.